Bismillah Rahman Rahim. We're going to start with your IELTS Writing Task 2, and IELTS Writing Task 2 is an essay writing. We call it essay writing. And essay writing is same for both IELTS Academic and IELTS GT students. In your book, this is table of contents. First, part 1 is about the foundation. And in foundation, there are 3 chapters. We may study 3 chapters. That's what is IELTS Writing Task 2, how your essay is scored, and then fully meant strategy. Then after that, we will move to part 2, and part 2 is about writing each paragraph. There are 3 clear main paragraphs where main body paragraph clear is divided into 2 parts. First of all, writing an introduction, then main body paragraphs, and then the last one is about conclusion. Part 3, this part clear, this is the most important part in your IELTS, for your IELTS essay writing. And most of you must clear improve them. This is called language mastery. Language mastery, you must know about the tenses, passives, sentence structures, clear, and then conditionals. We will study, inshallah, relative clauses, inversion, clear, subject-verb agreement, hedging, word formation, articles, prepositions, and then punctuations. And then part 4 of your IELTS writing is exam technique in time management, brainstorming and idea generation, and then 50 model band 9 essays. This is the complete part, and today we're going to talk about your first clear lecture, and the first lecture is all about, let me open it. That's about foundation. So in foundation, we need to understand chapter number 1, and in chapter number 1, we will study what is IELTS Writing Task 2. In IELTS, you do understand IELTS Writing Task. So in IELTS writing, we will have 2 tasks, task 1 and task 2. If you're for the GT student, so task 1 and task 1 for both IELTS Academic and GT, that is different. Task 1 only. But task 2 is same. If you're for the either for GT or academic, both tasks are the same. There's no difference. Then what is in task 1 and what is in task 2, clear? The difference between both. Task 1 for the academic students, it's a graph report writing, where task 2 is an essay writing. While for the GT students, instead of report writing, there would be a letter. You will study later. Once we start your task 1, then I will let you know. Then we will have 2 double classes, like GT students will have a separate class, and then the academic one will have separately. Then words limit for task 1, you will write 150 words, and for task 2, 250 words. Time, you may spend 20 minutes time on task 1 and 40 minutes time on task 2. And so far, the gradings are concerned. So 1/3 of your IELTS writing score, clear, you will have for task 1. Or what actually I mean is that task 2, clear, worth twice. Like the score for task 2 is double. For example, 33% of your score is for task 1, while 66% of your score, clear, that is for task 2. And as I mentioned earlier, topic, you will have data or process or either a letter, clear. But in task 2, that's same for both academic and GT students, and you will have a topic. And the topic can be related to any essay topic, education, health, environment, anything, clear. Then as I told you that first of all, we want to talk about task 2, not task 1, your essay writing. So task 2, clear, is worth twice, as much as task 1. So I won't say that task 1 is less important, because improving, learning, both tasks are important. If you achieve less band even in task 1, so your task 2 and overall IELTS band will be disturbed. So make sure you perform in both task 1 as well as in task 2. And both tasks, clear? We are supposed to perform the best. And then task 2, clear? Let's talk about what you must remember about task 2. Task 2, these are the numbers, and memorize them. First of all, for task 2, you will spend 40 minutes time. Total time you may spend, that is 40 minutes time. Then a word count, you may write on minimum 250 words, and maximum it must be in between 272 to 90 words. Not more than that, 290, and not less than 250, clear? Why? Because if you write 300 or 400 words, there are more chances of making mistakes, and more mistakes means less band.
The more you make mistakes, the less you will achieve ban. So this is important for all of you, that try your level best to achieve clear, to write down in between 270 to 290 words. And then you will write down 4 paragraph structure. Number 1, introduction. Number 2, main body paragraph 1. Then you will write main body paragraph 2. And the last one, that is called conclusion. So 4 body structure. And then marking criteria, clear, that's 25% each. And there are 4 areas. Number 1, task response. Number 2, coherence and cohesion. Number 3, vocabulary. And number 4, grammar. These are the 4 in equal marks for each, like 25% marks. So we will study clear. We will have proper classes on these 4 areas, because we need to understand how the examiner is going to grade us on writing. After that, as I told you, that task 2 double the weight of task 1. And even I suggest my students that when you write down, because you will be given an hour, the total time provided to you for IELTS writing task 1 and task 2, there is 1 hour time. And that 1 hour time, you are supposed to, I suggest you to write task 2 first, then task 1, because the score for this one is double, clear? And then we will study 5 different types of essay questions. Number 1, that is called opinion essay. Number 2, discussion, problem and solution, advantages, disadvantages, and double question essay. And then the score clear ranges from 1 to 9 band. And if you write less than 250 words, then you will get less band. But if you write more than 250, again, you are allowed. But I always suggest you do not write more than 70 to 290 words. And this is what I have written initially, that aim for 270 to 290 words, under 250, clear? Under 250 words means what? Automatic penalty. And make sure do not write under this, but you can write in between these words. More chances, if you over 300 words, more chances of errors and wasted time. So it's better, the sweet spot is what? 270 to 290 words. Okay, this is how you will be graded. Why task 2 matters more than you think? Because task 2 carries double the weight of task 1. And what actually I mean by this, this is your score calculation, clear? For example, strong task 2, for example, you achieved 7 band in task 2, but 5 band in task 1. So overall band, you will get 6.5. But weak task 2, it means if you achieve 7 band in your task 1, but 5 band in task 2, so your total band is 5.5. So make sure you improve both of them, clear? But task 2 is much more important than task 1. Many students spend too long on task 1, I mean 30 minutes or 30 plus, and then rush to task 2. Since task 2 is worth double, this is disaster for your score. So how I suggest you, if you struggle with time management, do task 2 first. This is allowed by IELTS. Start with task 2, 40 minutes, then do task 1, 20 minutes. This ensures clear your most valuable task gets your best effort and full-time allocation. Okay, then this chapter number 2, how your essay is scored. This is more important for you, and everybody must understand about it. The 4 marking criteria, your essay is scored by certified IELTS examiner on 4 criteria, and each criterion is worth 25%, I mean 9 band equal. Criterion number 1 is about task response. This is the first part, task response, and 25% contribution from this part. Okay, let's talk about what actually task response means. Task response is the first band descriptor IELTS examiners check. This is the first. Before they look at your grammar, vocabulary, cohesion, and coherence and cohesion, they ask one question. And this question is what? Did this candidate actually answer the question? For example, the question is about advantages and disadvantages of using mobile phone. So have you answered this question completely? He will ask the first question, clear? When he reads clear your entire essay, he will ask the first question. Did the candidate clear? He answered the question. If the answer is no, the maximum possible score is band 5 then. The maximum. Why? Because you haven't responded back
what the question asked you. No matter how beautiful your grammar is, task response 25% of your writing task 2 score. It is worth exactly the same as all your grammar, your vocabulary combined. Let me clear you here. There are 4 areas. Suppose grammar, 9 band. Vocabulary, 9 band. CC, coherence and cohesion, 9 band. And task response, TR, 9 band. So 9 multiplied by 4, 36. 36 divided by 4 is equal to 9 band. Now, examiner will check each area separately. For example, your grammar, he checks grammar. And suppose you get 6 band in your grammar. Then he checks your vocabulary. You got 7 in vocabulary. He checks your CC, you get 5 band. And your task response, suppose you get 8 band. Now, he calculates all of them. 6 plus 5, 11. 11 plus 7, 18. 18 plus 8, that's 26. 26 divided by 4 is equal to 6.5. Your overall band is 6.5. So make sure you improve all these 4 areas. Do not only work on your grammar or vocabulary, but you need to focus on your task response as well as CC. We will study one by one, inshallah, in detail now. Now, these are the questions, 5 band, 6, and 9 band. And examiner, for this part, Claire, he wants to know about these 3 questions. And what are those 3 questions? Number 1, did you answer, Claire, or address all the parts of the question? For example, the examiner asked about advantages and disadvantages. Advantages and disadvantage. What if a student, he has only talked about advantages and he didn't talk about the disadvantage? Definitely you haven't addressed all parts of the question. If you don't address all parts of the question, so you will achieve less band in your task response. Why? Because you haven't completed it. Number 1. Number 2, examiner, like for example, there are 4 paragraphs. Paragraph number 1 is introduction. Paragraph number 2 is main body paragraph 1, and then main body paragraph 2, and then conclusion. What if you don't write conclusion? So if you don't have your conclusion, your essay, so what does it mean? That your task response is incomplete because you need to write 4 paragraphs, but you have written 3 paragraphs. Or what if you don't have introduction in that? Then introduction, it consists of 2 parts, paraphrasing, plus later on we will study thesis statement. What if you have completely clear, you did paraphrasing, but you missed thesis statement, clear? So there is no clear position throughout your essay. So if there is no thesis statement, again, your task response is incomplete. And are your ideas fully developed and supported? What if your ideas are not fully supported? Your idea can be what? This is my idea. Idea needs to be explained, proper explanation and proper example. What if you don't have example in you're developing your ideas, you don't write example, or you don't have any explanation for the idea? So what does it mean? That your task achievement hasn't been, you haven't completed the task achievement. If you don't complete the task achievement, definitely you're going to score low band. Okay. So these are top 15 task responses mistake, and you are supposed to fix them up first. We haven't yet started anything clear. We didn't study, but we want to develop ideas gradually. Point number one, most of the time, this is a common mistake. The students off-topic response. Task response mistake is what? The question asks you about one thing, but you write down another. For example, the question asks you about early education. What type of education? Early education. And you just only write about education. So there's difference between education and early education. Clear? So what is more important? You need to write down what the question has asked you. The question asks about one thing and you write something else, so that your response is off the topic. And off the topic response means what? That you will achieve less pen and IELTS. Number 1. Number 2, ignoring question part. For example, the question asks you, discuss causes and solutions. But you have only discussed what causes. You haven't discussed solutions. So again, clear? Your count obligations cover each causes as well as solution, but you have covered up only causes, not solutions. So it means that you will get less pen. Unclear position. Your thesis statement, later on we will study inshallah about thesis statement. Thesis statement means what? Thesis statement means that
with your an introduction part, clear? Introduction part, you want to tell the examiner what you will write in your main body paragraphs. You want to tell the reader about your plan, and that's a thesis statement. For example, in your thesis statement, you mention both sides, clear? But later on, you don't write both sides. You write only about you agreed or and also disagreed. But both your main body paragraphs, if you want to write, you write only on agrees. Once we start main body paragraph, then you will understand about the thesis statement, because thesis statement is important. Thesis statement, I always call it like a car steering. It takes you, it guides you, it leads you till the end where you want to move. So later on, inshallah, we will study about the thesis statement. Once we start your introduction paragraph, you will be clear much there, inshallah. Okay, positioning shift. For example, positioning shift means in your thesis statement, you agreed, introduction, you agreed. So what does it mean that your main body paragraph 1, it has to be on agree, and main body paragraph 2, it has to be about disagree, not disagree. How? Position shift means what? In introduction, you agreed, but in main body paragraph, you disagreed. So align every topic sentence with what? With thesis statement. Later on, we will study that. And then memorize introduction. That's not important. Then shallow ideas, clear. Technology is useful. It helps people, no depth. So we will later on study about peel or T structure, inshallah, to develop ideas. We will study these structures. Too many ideas, 7 ideas, none developed. We just only take one idea or two ideas and we fully develop that properly, clear? We will study, inshallah, main body paragraph once we start. So we will study about it. Then no specific example. If you don't have an example, again, your task response is incomplete and you will achieve less pen and IELTS. Then copying the prompt. Copying the prompt means IELTS provide you the question and you just only copy. You don't paraphrase it. If you don't paraphrase, examiner won't give you score for that. And then under length. What if you write your essay is less than 250 words, 210, task response is incomplete. And bullet point format, list instead of paragraphs. Because IELTS essay is about paragraphs, not only about listing ideas. So if you list them down, that's not good idea. What we want to do, we want only always use paragraph format with full sentences, not listing ideas. And then missing conclusion, if you don't write missing conclusion, again, you won't get full score. And introducing new ideas in conclusion, again, that's not a good idea. We will study conclusion paragraph once we start writing the conclusion. And then emotional or informal tone. Your IELTS essay, it's an academic, clear, formal academic topic. So you are not supposed to use any emotions or informal tone. Clear? Both are encouraged because academic words and academic tone and register must be used here. And they memorize paraphrases like every coin has two sides. No, clear? You are supposed, because examiner can straight away notice and he can deduct your marks. Make sure you do not use any type of memorized parts. So these are some of the 15 topics that you should work on. The second most important part, clear, that you must focus on, that's the criteria, what examiner will be looking at, and it carries again 25% of your score. That's CC. There are 2 C's, not 1 C. Coherence and cohesion. Let me explain it. Hello, if you turn on your phone, that of your mics, please. Yes, sir. Okay, what do you mean by CC? Yes. There are 2 C's, not only 1. Coherence and cohesion. Yeah, what do you mean by coherence and cohesion? If anyone can explain it. That the words are relating to each other. Sir, as like, sir, whatever we write in the Yes, Writing is completeness. sir, whatever we write in the introduction, so we should explain it in the remaining 2 paragraphs, like main body 1 and main body 2. We should support it with examples. No, what actually you mean by coherence and cohesion? Coherence and cohesion means that organize your idea in logical form. Okay, that's good. Anyone else? So the words are relating to each other. Okay, someone else? That the words are stick to each other, like they are glued. All right. Someone else?
sequence idea logically, for example, where we will use example and explanation. Okay, let me guide you all, okay, and try to understand. There are 2 points, not one. Coherence and cohesion. Both of them play. There are 2 terms used, and most of the time we take it as one. No, they're not one. They are 2, not 1 point. For example, let me ask you. I want a table. So how many parts a table may have? Suppose आप एक टेबल बनाना चाहते हैं, so how many parts you may have in a table? Suppose you will have the top, right? Top होगा ना टेबल का? Number 1. Yeah, Number 2, you may have the base. Base भी हो सकते हैं ना उसका. exactly. And you may have the support. Or there might be some wheel. Am I right? Yes. हो सकते हैं ना हमारे पास. Yes, sir. तो एक टेबल में हमारे पास जो बड़े पुर्जे है, बड़े पार्ट्स है, टॉप है, सपोर्ट, मतलब उसके लिए सपोर्ट है, उसका बेस है, और यू मे हैव व्हील्स, राइट? ये जो पार्ट्स है, ये बड़े पार्ट्स जो है, इन्हें मैं कहता हूं कोहेरेंस. इन पार्ट्स में क्या होनी चाहिए? कोहेरेंसी. सपोज लेट मी आस्क यू, जो टॉप है, तो मैंने टॉप को टॉप पे रखना है. कैन आई पुट द टॉप इन प्लेस ऑफ बेस? कैन मैं टॉप को बेस की जगह इस्तेमाल कर सकता हूं? No, No, sir. sir. नो. नो. एक्सलेंट. क्या मैं टेबल के जो व्हील है, ठीक है, क्या मैं वो टॉप पे लगा सकता हूं? नो. No, sir. तो इसका मतलब यह है, कोहेरेंसी का मतलब यह है कि जो हमारे पास बड़ा पिक्चर है, बिग पिक्चर. एंड व्हाट इज दैट बिग पिक्चर? दैट बिग पिक्चर इज व्हाट? हमारे पास मतलब एक ऐसे है, तो हमारे पास ऐसे में इंट्रोडक्शन है कि नहीं? Yes, sir. देन मेन बॉडी पैराग्राफ है कि नहीं? 1, मेन बॉडी पैराग्राफ 2, And two. एंड देन कंक्लूजन. तो ये 4 हमारे पास 4 मेजर कंपोनेंट्स है. क्या मैं कंक्लूजन को एज अ फर्स्ट पैराग्राफ लिख सकता हूं? No, sir. नहीं No, लिख sir. सकता ना. एक्सलेंट, नहीं लिख No, सकता. sir. वेरी गुड. अच्छा, मेरे पास मतलब अगर एक पैराग्राफ को लिखना चाहता हूँ, तो पैराग्राफ में मेरे पास फॉर एग्जांपल आई हैव 4 और 3 कंपोनेंट्स. कंपोनेंट नंबर 1 टॉपिक सेंटेंस है, राइट? देन एक्सप्लेनेशन है, फिर मेरे पास एग्जाम्पल है. क्या मैं एग्जाम्पल को पहले लिख सकता हूँ? नो सर. No. तो मतलब एक प्रॉपर लॉजिक होगा ना इसमें. तो ये जो लॉजिक है, ये लॉजिकल फ्लो, ये लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड वे जो है, इसे मैं क्या कहता हूं? इसे मैं कहता हूं कोहेरेंसी. Coherence. इसे क्या कहा जाता है? कोहेरेंस. कोहेरेंस, ठीक है ना? कि आपको मतलब इज योर ऐसे लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड. समझ रहे? नंबर 1, आर पैराग्राफ्स यूज्ड करेक्टली. तो ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? ये इस चीज के लिए इस्तेमाल होता है कि आपने इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास 2 हिस्से हैं. सपोज पैराफ्रेजिंग है प्लस थीस स्टेटमेंट. तो पहले मैंने पैराफ्रेजिंग लिखना है, देन आई हैव टू राइट थीस स्टेटमेंट. क्या मैं पहले थीस स्टेटमेंट और फिर पैराफ्रेजिंग कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि इसमें लॉजिकल फ्लो नहीं होगा फिर. समझ रहे? तो ये नंबर 1 है. दिस इज व्हाट वी कॉल कोहेरेंसी. जैसे मैंने टेबल का एक मिसाल दिया कि आपके पास टॉप है, टॉप के पास सपोर्ट है, बेस है, राइट? अब मैं कोहेजन का क्या मतलब है? लेट्स टेक दिस वन एग्जांपल फॉर कोहेजन. कोहेजन का मतलब ये है कि अब मेरी बात सुने, ये जो बड़े हिस्से हैं, तो बड़े हिस्से को सपोज मैं अगर टॉप को, ये बेस, इस टॉप को अगर सपोर्ट के साथ मिलाना चाहता हूं, इफ आई जस्ट वांट टू कनेक्ट विद दैट, डू आई नीड सम ग्लू? डू आई नीड ग्लू? Yes, डू sir. आई नीड नेल्स? मुझे जरूरत है ना इन चीजों की. हम्म तो ये नेल्स और ग्लू किस चीज के काम आ रहे हैं? ये कोहेजन का काम कर रहे हैं, ताकि Cohesion. एक हिस्से को, एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ मैं क्या करूं? प्रॉपर तरीके से मिला दूं. समझ रहे आप लोग? Yes. हेलो? Yes, तो sir. कोहेजन क्या है? Yeah. कोहेजन आर नेल्स, कोहेजन आर ग्लू. क्लियर? Blues. तो अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है आप लोग को आपके Linking समझाने word. के लिए. इट्स अंडरस्टैंड कोहेरेंस, क्लियर द बिग पिक्चर, हाउ योर आइडियाज फ्लो लॉजिकली. मतलब इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पैराग्राफ 1, 2 एंड कंक्लूजन. एंड कोहेजन इज व्हाट? द सेंटेंस लेवल टूल्स. जो टूल्स हमारे पास, लिंकिंग वर्ड्स है. सो दीज लिंकिंग वर्ड्स, प्रोनाउंस, सिनोनिम्स दैट ग्लू योर सेंटेंसेस टुगेदर. सो ये हमारे पास कोहेजन होता है. दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. अच्छा, अब देखिए,
For example, think of your essay as a building. हमारे पास ऐसा building है. The architectural blueprint, room, layout, logical flow. तो ये हमारे पास क्या coherence है. Cohesion क्या होता है? ये हमारे पास cohesion है. Cement, clear? So now cement, nails, glue, holding the bricks together. So you need both to build a band 9 essay. You need coherency as well as cohesion. Coherence and cohesion, both of them, you need them to achieve high band. अच्छा, यहां पे मैंने कुछ लिखा है, ये समझने की आप लोग को कोशिश करना होगी. Number 1, band 9 secret. Band 9 does not mean using more linkers. हेलो, अब मेरी बात सुने और इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें अक्सर what we study and what we hear from the teachers or on YouTube, you will always be told कि आप लोग कोशिश करें कि ज्यादा लिंकर्स का इस्तेमाल करें. Am I right? Using more linkers, like use moreover, in addition, बड़े बड़े लिंकर्स, however, ये इस्तेमाल करने की कोशिश करें. आज मैं आप लोगों को बताने sir. बताने वाला हूं कि इट मींस कि लिंकर्स का मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा लिंकर्स इस्तेमाल करें. लिंकर्स का मतलब ये है कि यूज देम इनविजिबली. मेरी बात सुने. ये लिंकर्स जो है ना, लिंकर्स, अगर आपके एग्जामिनर को, इफ योर एग्जामिनर नोटिसेस यू आर लिंकिंग वर्ड्स, यू आर प्रोबेबली ओवर यूजिंग देम. If the examiner he notices that yes, a candidate, he uses what, more linkers, so he comes to know about that. If he notices and you have used, so iska matlab hai you have overused them. Cohesion should feel like breathing, natural and unnoticed. मेरी बात सुने, मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँ, इस चीज को समझे, अदरवाइज यू वॉन्ट अचीव हाई बैंड देन इन इट. अक्सर हमें बताया जा रहा है कि जितना आप लिंकर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और जितना एग्जामिनर को, जिनके जो एग्जामिनर के नजर में आएंगे तो आपके अच्छे बैंड आएंगे. ये गलत आइडिया है. आपके लिंकर्स ऐसे होने चाहिए कि फॉर एग्जांपल, अब एक दर्जी है, ठीक है, आप दर्जी को कपड़े दे देते हैं, वो स्टिचिंग कर लेता है ना, स्टिच, ही स्टिचेस योर क्लॉथ्स. तो आप कौन सी दर्जी को पसंद करेंगे? उस दर्जी को कि जो स्टिचिंग तो कर रहे हैं लेकिन इनविजिबल है. जो स्ट्रेचिंग वो कर रहे हैं वो इनविजिबल है. तो आपको वो दर्जी बहुत अच्छा लग रहा है कि वो दर्जी की जो आपको स्टिचिंग करके दे लेकिन वो विजिबल है? कौन सा वाला आपको बेहतर लग रहा है? हेलो, Invisible. इनविजिबल जो वन. visible. एक्सेलेंट. तो इसीलिए मैं कहता हूं, अगर मैं यहाँ पे एंड आई स्टार्ट ब्रीथिंग, तो जो बंदा, मतलब आप जब यू सिट इन नेक्स्ट टू समवन एंड ही स्टार्ट्स ब्रीदिंग एंड यू डोंट नोटिस द वे ही ब्रीथ्स, और यह मतलब वो एक बंदा एकदम से ब्रीथिंग शुरू कर दे, तो कौन सा वाला मतलब ठीक है? नॉर्मल कौन सा है? द वन लाइक ही ब्रीथ्स क्लियर इनविजिबली. तो आप लोगों की जो लिंकर्स है, अच्छा अब Yeah. मुझे ये बताइए, जो आप अभी तक आप जो रीड कर रहे थे ना, रीडिंग हमने पढ़ा है ना अभी, जो पैराग्राफ्स Yes, हमारे sir. पास थे, तो पैराग्राफ्स मुश्किल क्यों थे? पैराग्राफ्स मुश्किल इसलिए थे कि वहां पे जो लिंकर्स इस्तेमाल हो रहे थे वो इनविजिबल इस्तेमाल हो रहे थे भाई. Invisible थे. एग्जैक्टली Yes, sir. वहां पे मतलब आपको कोई विजिबल लिंकर नजर आ रहा था? नहीं. तो लिंकर विजिबल नहीं था, तो इसीलिए तो हमारे कम बैंड आ जाते हैं फिर. तो जितना आप अपने लिंकर्स को इनविजिबल बना देंगे तो इट मींस यू आर अ स्ट्रांग क्लियर राइटर. आपका जो राइटिंग स्किल है वो बहुत मजबूत है. अच्छा, हेलो. Yes, Yes, sir. sir. Then you can master some of the linking words I have mentioned here for additional linkers besides as well, clear, coupled with not only but also. And then there are some of the common mistakes, you can read them at home. And then cause and effect के लिए हमारे पास होनी चाहिए, because, since, as a result, consequences, due to. तो ये linkers आपके पास must होने चाहिए. सर अगर हम ये सॉरी सर, अगर हम जी. ये डिफरेंट लिंकर डिफरेंट वर्ड यूज करें तो इस तरह तो विजिबल हो गया नहीं, सर मतलब बिकॉज कैसे? ड्यू टू एज अ रिजल्ट डिफरेंट लिंकर जो है ना सर, हाँ, صح بصور لها मतलब جدا एक वर्ड को كمان दोबारा جدا रिपीट ना करे, بصور दूसरा लिंकर यूज करे, तो नहीं, फिर इसमें लिंकर जो विजिबिलिटी. इस्तेमाल करे, चाहे जो भी आप इस्तेमाल करें, लिंकर जो भी आप इस्तेमाल करें भाई, उसका नहीं है. आप लिंकर, ऐसा लिंकर इस्तेमाल करें जो नजर में ना आए. और सर माय सेकंड क्वेश्चन इज, जो रीडिंग में हम वो एक्सप्लेनेशन के लिए वो डैश लगाते थे ना, तो इसमें हाँ, लगा सकते हैं वो एक्सप्लेन क्यों करने नहीं? के लिए? क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? यस.
सर इस तरह मैक्सिमम कितने लिंकर इस्तेमाल कर सकते हैं एक पैराग्राफ लिंकर्स में? आप जितने भी इस्तेमाल करें, लेकिन लिंकर्स ऐसे यूज होने चाहिए कि जो नजर ना आए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, ये भी लिंकर है ना, दिस लिंकर नहीं है, दिस अ लिंकर, इट्स अ लिंकिंग। Yes, आप sir. लिंकिंग, आप लोग का मसला ये है, आप लोग का मसला ये है कि यू पीपल ओनली कॉल लिंकर्स मोर ओवर, इन एडिशन, फॉर एग्जाम्पल, हावेवर, इन्हें आप लिंकर्स कहते हैं। एम आई राइट? तो अब यस सर। सिर्फ वो लिंकर्स नहीं है, दिस इज बिकॉज, तो दिस इज बिकॉज क्या है? लिंकिंग है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? सिर्फ हमारे पास ये नहीं है फॉर दिस रीजन, ये भी लिंक करे, दस क्या है, ये भी लिंक करे, हेंस क्या है, ये भी लिंक करे, देयर फोर भी लिंक करे, तो फोर, देयर फोर इट्स अ बिग वर्ड। ठीक है? अब अगर मैं ये दोनों को, इन दोनों को देखे, आपको ज्यादा नजर में कौन सा आ रहा है, देयर फोर के दस? Therefore, एग्जैक्टली अब आपको देखे यहाँ पे फॉर दिस रीजन, आपको ये नजर आ रहा है कि देयर फोर, ये therefore, बड़े sir. लिंकर्स है, तो इन्हें अवॉइड करे। आई डोंट लाइक देम। अच्छा यहाँ पे देखिए, ड्यू टू पुअर प्लानिंग, ये है ना, ड्यू टू पुअर प्लानिंग, लिंकर इस्तेमाल नहीं हुआ। Yes, sir. लेकिन it's not visible. एग्जैक्टली यही कमाल है इसमें, बच्चे क्यों अच्छे बैंड नहीं ले रहे? अच्छा यहाँ पे देखिए, दिस लीड्स टू, अब देखिए दिस लीड्स टू, तो अब रीडिंग में आप जब रीड कर रहे थे तो वो कौन से लिंकर्स, ये वाले लिंकर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। This leads to यस yes. सर। एग्जैक्टली, एंड दिस इज व्हाट लाइक अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखा है कि पोल्यूशन रिजल्ट्स एन, अगर पोल्यूशन रिजल्ट्स एन लिखा है, अगर ये मैं लिखो एज अ रिजल्ट, तो एज अ रिजल्ट मोर विजिबल है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Pollution. तो यही यही चीज है कि आप लोगों ने सीखना है, ठीक है ना? आप लोगों ने ये सीखना है कि जब भी आप लोग लिंकर्स इस्तेमाल करें तो इस तरीके से इस्तेमाल करें कि जो नजर ना आए। अब यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल्स है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच इज अ केस इन पॉइंट, टू इलिस्ट्रेट नेमली, तो दे कैन बी यूज फॉर व्हाट, फॉर एग्जाम्पल्स। देन यू मे हैव फर्स्टली, सेकेंडली, इन फैक्ट, particularly, especially, clear, ऑर्डर के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सर टू ये समराइज, मैकेनिकल लिंकर्स क्या होते? सॉरी, ये मैकेनिकल लिंकर्स क्या होते? मतलब यही लिंकर्स हैं ना जो अक्सर हमारे जो पास है बड़े बड़े, बड़े बड़े वो लिंकर्स जो, एप्स हमें दिखाता है कि आपने वो नहीं किए तो ऐसे मतलब में। नहीं, ऐप आपको क्या 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 कहता है कि आपने क्या किया हुआ है? अक्सर जब हम ये इस्तेमाल करते हैं ना हाँ हाँ, फर्स्टली सेकेंडली, तो अक्सर वो कहते हैं कि ये आपने मैकेनिकल लिंकर एग्जैक्टली इस्तेमाल ये किए ना, तो एक फर्स्ट एंड पैराग्राफ में। सेकेंडली, हाँ यहाँ पे देखे ना, ये वो वर्ड्स होते हैं कि आप लोग, ये अननेचुरल है, ये अननेचुरल है, ये अच्छा जी। तरीका नहीं है कि आप बार बार मतलब फर्स्टली और सेकेंडली इस्तेमाल करें। हेलो? सर ये इसके फर्स्टली, ये हम क्या सेकेंडली, इस्तेमाल थर्डली, कर सकते हैं ये इस? ना इस्तेमाल करें आप, लाइक ये ना जी। करें। देखिए ये मैकेनिकल है, मैकेनिकल क्या है? मैकेनिकल इसलिए कह देता ना, ये लिखना चाहते हैं बिकॉज यू वांट टू राइट, लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई से फर्स्टली पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग, secondly people use more cars, furthermore government should act, therefore strict laws are needed, in conclusion, तो ये क्या है? this sounds clear, quite unnatural। तो मैकेनिकल चीज में आपको क्या आ रहा है? ये अननेचुरल है। अब बजाय कि ये मैकेनिकल चीज इस्तेमाल कर, इसकी जगह आप लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? यू कैन यूज ऑल्सो, एज वेल एज, वाइल, वेयर एज, वाइल, ठीक है? ये इस्तेमाल करिए। फर्स्टली, सेकेंडली ये चीजें ना इस्तेमाल करें, क्योंकि फर्स्टली, सेकेंडली तो हर जगह पे होता है, और सर ये लोग हम लॉजिकल यूज सीक्वेंस को के लिए ये इस्तेमाल कर देते हैं। दैट्स व्हाई दे अचीव लेस बैंड। इवन आई हैव मेंशन हियर, बैंड 5 to 6 ट्रैप क्यों है? स्टूडेंट्स थिंक यूजिंग फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली इन एवरी पैराग्राफ। yes sir in the beginning एग्जैक्टली ये गलत है। So real band 8, 7 plus writer use what? How? Spangly. Once per essay maximum. Instead, they use what? Internal logic, like one reason, another factor, Internal the logic. most important point. This sounds more natural. Can you see? बजाय ये कि आप sir लिखिए फर्स्टली, सेकेंडली और थर्डली और फोर्थली। यस प्लीज। sir सर ये अगर कह sir, सकते हैं सेकंड अगर ये पॉइंट थर्ड। सर अगर ये हम पैराग्राफ में लिखे ना, बॉडी 1 पैराग्राफ में और बॉडी 2 पैराग्राफ में, सर तो उसके लिए कौन कौन सा यूज मेरे भाई, करेंगे? ये फर्स्टली और सेकेंडली बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, डोंट यूज देम। सर इसके लॉजिक।
फिर ओपिनियन ऐसे और एडवांटेजेस और ये डिस्कशन ऐसे के लिए तो फिर अलग अलग यूज करना पड़ेगा। नो नीड ऑफ दैट, व्हाई? क्यों अलग अलग इस्तेमाल करना पड़ेगा? मैं आप लोग को अभी मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा था, उसमें आप मुझे दिखाए कहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया हुआ है एंड हाउ वी कैन यस यूज दैट। मैं अभी आप लोग को एग्जांपल दूंगा, अभी दोबारा आप लॉग इन हो जाए, ठीक